Hello, children. Welcome back. Today we'll discuss. In the previous class, we had discussed about our one of our poetry, which is Daffodils, which is written by William Wordsworth. Okay. ଆଉ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଚାପ୍ଟର ସେଇ ପୋଏଟ୍ରିର ମାନେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ପାର୍ଟଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ପାର୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଆମର ଜେନେରାଲି ପୋଏଟ୍ରିରେ ମାନେ ଜେନେରାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇକିରି ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମର ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ରିଲେଟ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସେ बट हेले भी जेहेतु क्वेश्चन आंसर्स हमर माने पार्ट रे पोएट्री रे दिया हेची तो सेडा को हमें कंप्लीट करि नबा ओके होप ए क्वेश्चन आंसर्स रु तमन को आइडियाज मिली जिवो कि केमती आंसर्स लिखिबार अछि एग्जाम्स रे कोइ जदी सेम क्वेश्चंस की सेम रिलेटिव क्वेश्चंस आसिला ताले ओके विल स्टार्टेड थिंक इट आउट फर्स्ट क्वेश्चन ओके व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स माने तार मानेटा कोन से क्वेश्चन नो मानेटा कोन आम पोएट डैफोडिल्स को केते बेले देखिले माने जेतले डैफोडिल्स को केतले देखिले हम काली जो पढितले the answer टा हबो the poet was wandering alone like a cloud that floated high over valleys and hills. It was then that he saw the daffodils by the side of the lake. Okay, माने आमे प्रीवियस क्लास जेतले म तुमको एक्सप्लेन करथली आमे देखितले डैफोडिल्स रो जो पोएम टा I wandered lonely as a cloud ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠି ମାନେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ କି କ୍ଲାଉଡ୍ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯାହାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ନଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ରେ ଲେକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ସେ ମାନେ ଇଏଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ନା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଯୋଉ ହୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଦେଖିଲେ ଓକେ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି the poet was wandering alone like a cloud that floated high over valleys and hills. It was then that he saw the daffodils by the side of a lake. Okay, ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା କ'ଣ ପଚାରିଛି where did the poet see the daffodils ଆମ poet daffodils को କୋଉଠି ଦେଖିଲେ obviously the poet while wandering alone saw a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଥିଲା when all that once I saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees okay ତ ସେଠି poem ରେ ଆମର mention କରାଯାଇଛି poem ର first stanza ର ଆମର fifth line ରେ ଯେମିତି mention କରାଯାଇଛି beside the lake beneath the trees okay the poet while wandering alone saw a host of golden daffodils beside a lake and beneath the trees okay ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଆନ୍ସରଟା ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆଉ କେମିତି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଆଉ ମାନେ ଆନ୍ସର ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ଥର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି fill in the blanks to describe the idea of stanza 1. The poet was dash in the English countryside. He saw thousands of dash fluttering and dancing beneath dash and beside dash. The daffodils appeared to be dash in the strong breeze. ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର୍ସଟା କ'ଣ ହବ the poet was କ'ଣ କରୁଥିଲେ poet ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ he was wandering in the English countryside. He saw thousands of କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ thousands of କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା daffodils ଦେଖିଲେ daffodils କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା fluttering and dancing beneath the trees okay beneath the trees and beside the lake okay the daffodils appeared to be dancing in a strong breeze the daffodils ମାନେ ସେ daffodils କ'ଣ କରୁଥିଲେ the daffodils dance କରୁଥିଲେ okay in the strong breeze ଯେମିତି କି ଆମର first stanza ପୁରା completely same ଅଛି I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze okay then ଆମେ ଯିବା ଆମ fourth question ଆଡ଼କୁ fourth question ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚରା ହେଇଛି what does the poet compare the daffodils with poet ଆମ daffodils କୁ କାହା ସହିତ compare କରିଛନ୍ତି okay ମାନେ comparison ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ second stanza ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ଥିଲା second stanza continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way ମାନେ ଆମର poet daffodils को କାହା ସହିତ compare କରିଥିଲେ the poet compares the daffodils to the stars twinkling in the sky like in the milky way
माने आकाश रे जो आम मिल्की वे गैलेक्सी रे जो स्टार्स गुड़ा जमती जो प्रेजेंट अच्छे से जमती शाइन करती सेमती डैफोडिल्स भी से भाया शाइन करते शाइन माने कौन पाई से शाइन कहते बिकज जमती स्टार्स रो कलर आमर गोल्डन येलो सेमती डैफोडिल्स रो कलर भी गोल्डन येलो थिला ओके देन आमर फिफ्थ क्वेश्चन आड़ को जीवा आम फिफ्थ क्वेश्चन आमर कौन कही what resemblance does he find between the stars and the daffodils माने से स्टार आउ डैफोडिल्स भितर कौन सिमिलरिटी देखिले माने कौन एमती सिमिलरिटी देखिले जिसे से को कंपेयर करथिले द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन द स्टार्स एंड डैफोडिल्स the daffodils are countless in number and their golden petals shine with the breeze similarly the stars in the sky are countless and they twinkle brightly and emit their shine in the sky माने कौन ना एटी आमर पोएट स्टार सहित डैफोडिल्स को कंपेयर करिवार मेन रीजन हैला ने आमे जेमती आकाश रे जेतबेले आमे तारा देखू तो तारार किसी पर्टिकुलर काउंट न थाए माने 10टा तारा अछि 5टा तारा अछि 1000टा तारा अछि लक्ष तारा अछि माने एते कोटी कोटी तारा माने आम आकाश रे थांती कि जहाको आमे काउंट करि पारनु तो सेही हिसाब रे हमर पोएट ताकू सेत पे डैफोडिल्स भी लेक साइड रे एते सारा थिले कि पोएट से डैफोडिल्स केते सारा अछन ताकू काउंट करि पारलेनी सेत पे से कोन कहले ना होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स माने एते सारा डैफोडिल्स थिले ओके जमती कि हमरा स्टार माने राति रे ट्विंकल करिकी हमकु लाइट एमिट करंती सेही भलिया हमरा माने जेमती लाइट माने गोल्डन येलो लाइट एमिट करंती सेही भलिया हम डैफोडिल्स भी गोल्डन येलो कलर रा थिले ओके देन विल मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन कौन पचारची what does the poet say about the number of flowers poet हमरा number of flowers माने केते flowers थिले बिली कहउतले ओके से कोन कहितले सेकंड स्टैंजा रे हमरा continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way they stressed in never ending line along the margin of the bay 10,000 saw I at a glance माने कोन करतले से माने हम पोएट माने थरे केरे से भाबिले कि 10,000 पाखापाखि थिबो बोधे ओके तो सेही हिसाब रे when the poet saw the daffodils at a glance he could see that they were 10,000 in number by this he meant that the flowers were uncountable माने सेठी 10,000 फ्लावर्स तो थिले बट सेही सेंटेंस जो वे से सेंटेंस रो कहि चंदी से सेतरे प्रेजेंट कर चंदी कि एते सारा फ्लावर्स थिले कि मु काउंट करि पारलिनी सो मो निज अनुमान रे कहूची 10,000 ओके Then we'll move to the seventh question. What is the seventh question? Where were the flowers? When I say flowers, कोड थिले. I mean, in the previous year पढ़ले that flowers were on the bank of a lake and beneath the trees. Flowers कोड थिले ना bank of a lake or beneath the trees. Okay. Then we'll move to the eighth question, which is which of the two danced more sprinkly, the waves or the daffodils? माने the sorry children जो मझरे जो माने disturbance create हैला class रे I am so sorry for that but हेले we will continue with the class which of the two danced more sprightly, the waves or the daffodils? तापर जेतले हम पोएट हमको जो माने वेव्स सहित कंपेयर करिसंती हम डैफोडिल्स को थर्ड पैराग्राफ रे जम दैछंती द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली माने कोन ना द वेव्स भी माने हमर झुमी झुमी आसंती बट जो डैफोडिल्स रो जो वे ऑफ डांसिंग जो वे ऑफ फ्लटरिंग जोडा थिला सेटा हमर लेक्स रो वेव्स गुडा को भी पछरे छाडितला माने ताठू भी बहुत ही बेटर थिला तो सही हिसाब रे हम पोएट कोन माने आंसर टा कोन हबो both the waves and the daffodils danced cheerfully but the daffodils were more jolly than the waves they were energetic and exuberant energetic माने माने बहुत ही एनर्जी तांको भीतर माने बहुत सारा एनर्जी माने बहुत जॉय बहुत हैप्पीनेस सेटा को देखले लागुतिला ओके then we'll move to the ninth question रे हमर कोन दिया हिची ना how does the poet feel while looking at the daffodils
आम पोएट डैफोडिल्स को जो देखिले से कौन फील कले द पोएट वाज हैप्पी एंड cheerful in the company of the daffodils. He continued to gaze at them and observe their merriment. merriment एटी कौन ना से को हिसाब रे निजको खुशी रे रखुतले माने जो ब्रीज होतला से डांस करके एते खुशी माने एमती लागुता एते खुशी अछंती से माने तो सेही हिसाब रे जेतले जी भी माने आम पोएट जेतले से जिंसटा को देखिले सी भी तांको अंतरात्मा भी पूरा खुशी हे गला ओके तो माने पोएट रो माने आम पोएट कर फीलिंग्स कौन थला डैफोडिल्स को देखि ना ही वाज हैप्पी एंड cheerful से बहुत खुशी और बहुत cheerful फील कले ओके then we'll move to the 10th question 10th question रे कौन दिया छी what happens to the poet when he lies on the couch माने आम पोएट माने पोएट जेतबेले हमर काउच को माने निज काउच रे लाई करंती माने कोन निज काउच रे गड़ीबा को जानती माने दिन मान सारा सब काम दाम सारी कि जेतबेले से माने निज काउच को जानती तांको माइंड रे कोन आसे माने तांको से कोन फील करंती से कोन हुए तांको सो जेमति कि हम फोर्थ स्टैंजा रे देइची for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. Okay, when the poet lied on his couch in a vacant or a thoughtful mood, the sight of the daffodils came alive to his mind. ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ମାନେଟା କ'ଣ कि ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୋଏଟ କାଉଚରେ ମାନେ ଲାଇ କରନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ଯୋଉ ସିନେରୀଟା ଯୋଉଟା ସେ ଲେକ୍ ସାଇଡରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ ଓକେ ଦ ଜୟ ହି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଅବଜର୍ଭିଂ ଦ ଫ୍ଲାୱର୍ସ ଗଟ୍ ଇଚ୍ଡ in his memory forever. He recalled those memories and felt the same joy again. से कौन है ना सीए जो माने दृश्यटा देखिथिले लेक साइड रे से दृश्यटा तांका आखि सामने रे नाची उठिला से जो दृश्यटा आखि सामने जेत नाची उठला से दृश्य को देखिकिरी हम पोएट मने मने एते खुशी हेले कि से खुशीटा को वर्णना भी करि पारुनांती कि माने सी भी माने खुशी रे माने से डैफोडिल्स जेमती माने तांकर माने हेड टाକୁ स्विंग करिकी ब्रीज रे जेमती डांस करतले सी भी सेमती माने तांको काउच रे लाई करिकी तांको हेड टाକୁ एमती माने टू एंड फ्रो मोशन रे हले कि सी भी डांस करूथिले ओके he recalled those memories and felt the same joy again माने से कोन सी सेही मेमोरीज को माने सेही जिंस गुडा को रिकॉल करिकी माने मने मने बहुत खुशी होउथिले okay then we'll move to the 11th question रे कोन दियाइची mention the two moods of the poet माने एठी mention the two moods of the poet माने आम पोएट जो एई जो पोएट्री रे तांकर को दीटा मूड विषय रे माने लिखि छथि the first mood of the poet was vacant or pensive mood माने जेतले हमर जेमति कहि छथि सब काम दाम सारी माने हम पोएट तांको काउच रे जाइकरी विश्राम नियंती सेतबेले कोन होय ना तांका सामना आखि सामना को माने गोटे माने गोटे दृश्य पळे आसे दृश्य की दृश्य ना से डांसिंग डैफोडिल्स रो दृश्य आसे बट माने से दृश्यटा केतो बेले आसे तांको माइंड को से तो केतो आसे माने सब बेले से तांको माइंड रे किछि टेंशन थाउ कि न थाउ ओके तांको मन को सेही सब जिंस आसे तो सेठी सेही जगह रे कोन दीटा मूड डिस्क्राइब कर गोटे मूड माने वेकेंट एंड पेंसिव मूड डिस्क्राइब कराई छी A second mood was the blissful one when he recalled the sight of the blooming daffodils while lying on his couch. Second कौन हुए ना जेतबेले सीए जो माने वेकेंट और पेंसिव मूड रे जेतबेले थाई कि तांको काउच रे विश्राम नियंती सेतबेले तांको आखि सामने जो दृश्यटा आसे ता परर तांको माने मनर स्थितिटा को वर्णना कराई छी मनर स्थिति तांकर कोन थाए ना सीए माने सेही दृश्य को जो आखि सामना को जो तांकर दृश्यटा जो नाची उठे तांको आखि सामना रे सेही दृश्य को देखिकिरी से एते खुशी हुअंती माने कि सेटा अवर्णनीय ओके तो सेही जिंसटा को तांकर सेटा हला तांकर सेकंड मूड ओके फर्स्ट मूड हला तांकर टेंशन पेंसिव मूड और सेकंड मूड हला तांकर हैप्पी मूड ओके नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन रे कोन देई छी what does the poet feel when he remembers the sight of the daffodils माने एटी दिया छी हम पोएट कौन फील करती माने तांको मन रे कौन भावना सृष्टि हुए जितबेले से डैफोडिल्स विषय रे भाबंती ओके
तांको मनरे एमती कौन भावनाटा सृष्टि हुए पोएट को मनरे कौन भावनाटा सृष्टि तो यही जगह आमको पचरा कि आम पोएट माने जितेबाला से माने दृश्यटा को रिकॉल करती मनरे माने कौन फील करती से So when the poet remembers the sight of the daffodils, his heart becomes ecstatic and his mind lightens up. माने कौन हुए ना तांकर जितेबाला से माने सेई दृश्यटा को रिकॉल करती से दृश्यटा को मन पकाती तो तांको मन भीतर जो खुशीटा जोटा से वर्णना करि पारु नथिले से खुशीटा को से अनुभव करती खाली किंतु वर्णना करि पारंतिनी आउ तांको माइंड पूरा फ्रेश हो जाए तांको मनरे जो टेंशनटा थिला से टेंशनटा पूरा दूर हो जाए आउ से पूरा टेंशन फ्री हो जाती ओके देन विल मूव टू द 13th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन रे कोन अछि ना when does the poet write the poem beside or of the lake माने ए पोएम टाकू पोएट केत्ता बेले लेखंती the poet was written of the lake the poet experienced the company of the daffodils while wandering alone he recalled the sight later on and wrote the poem माने कौन हला ना पोएट आमर जी थिले सी कौन कले कि सी तो लेक साइड रे सब व्यू देखि कि आसिले तो तांको ए व्यू टा तांको मन रे एमिति माने घर करि नैतला कि तांको माने आखि सामने रे एमिति गोटे दृश्य सृष्टि कला कि तापर से दृश्य को से नहीं माने से दृश्य को आखि आगे रखिकी से माने निजर ए पोएट्री टाकू लेखिले द पोएट्री आ जो पोएट्री नाटा देले से डैफोडिल्स ओके देन विल मूव टू 14th क्वेश्चन रे कोन दियाइची Do you find a rhyme scheme in the poem? The rhyming scheme of the first stanza is A B A B, cloud and crowd, B hills and daffodils, ending with the rhyming couplet C C, C trees and breeze. Is the rhyme scheme similar in other three stanzas or do you find any variation? Okay. पिला माने मु तम मान को एठी गोटे नुआ जिंस तम मान को बते दोची राइम स्कीम ता हमें केमती जानिबा हमर माने ये रे जो माने कोन कहते ने हम पोएम रे हमर राइम स्कीम ता कोन अछि हमें केमती जानिबा ओके एठी देखिबा माने पर्टिकुलर वर्ड रो लास्ट लाइन टाकू माने लास्ट वर्ड टाकू हमें कंसीडर करो ओके क्राउड तो ड साउंड होची हिल्स डैफोडिल्स इल्स साउंड होची ट्रीज ब्रीज तो इज साउंड होची तो सिमिलर साउंड जदि दीटा वर्ड रा माने जेमति हमें कहू माने क्राउड जेमति हला तो दीटा रा लास्ट साउंड ता जो होची ड आछी तो तार राइमिंग स्कीम कोन होबा ना ए ओके तो सेम हिसाब रे हमर फर्स्ट आंसर राइमिंग स्कीम कोन हबो ना आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड माने ड कहले सेटा माने एमती नहीं कि ड अछि बिली कहि कि ए लिखा हबो जा भी था जदी हिल्स थांदा सेटी तो ए लिखा हितांदा ओके ए लिखा हबो देन दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर व्हील्स एंड हिल्स सेटा भी डिफरेंट अछि क्लाउड टू तो डिफरेंट अछि ना आरो हिल्स रो तो एटा लिखा हबो बी When all at glance I saw a crowd माने कौन ड लिखा है माने कौन हबो हमरा क्लाउड और क्राउड रो राइमिंग स्कीम एका तो क्लाउड आगे कौन लिखा है ए लिखा है तो सेई राइमिंग स्कीम ए टा पुणी रिपीट हबो क्राउड रे कौन हबो ना ए अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स हिल्स इल्स डैफोडिल्स सेम आछि तो हिल्स रे जेतु बी लिखा है एटी कौन लिखा हबो ना बी ओके फोर्थ लाइन रे हमरा बी हैला beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze trees of breeze तो से जगह कौन हबो ना सी तो हमर फर्स्ट आंसर राइमिंग स्कीम टा कौन हबो ए बी सी हैला मैं पिला प्लीज ध्यान दे कि लिखि दिया जेटा फर्स्ट आंसर हमर राइमिंग स्कीम हबो ए बी सी ओके देन सेकंड स्टैंजा को जीवा हमें सेकंड स्टैंजा रे कौन दिया हिची continuous as the stars that shine माने A and twinkle on the milky way shine और way रो किछि माने राइमिंग स्कीम सेम साउंड लागुनी तो वे माने सही लाइन रे लिखा हबो B they stressed in never ending line shine line सेम अछि ताले हबो कोन ना A
along the margin of a bay, bay. कौन हबो? B. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. माने कौन हबो? CC ମାନେ ଯେହେତୁ dance glance dance ଅଛି ତ CC ତ second stanza ର ବି rhyming scheme କଣ ହବ ନା A B C then ଆମେ fourth stanza କୁ ଗଲେ fourth stanza ର ବି rhyming scheme पूरा same हब sorry fourth stanza ର rhyming scheme same हबनी fourth stanza ର ଟିକେ different हब fourth stanza ର rhyming scheme टा कौन हब sorry third stanza ର rhyming scheme हब हमर the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. माने कौन हब ना आमर जेहेतु the waves beside them danced, but they आउ एठी third line रे कौन अछि a poet could not but be gay. माने से दिटा कौन हब ना A हब okay then outdid the sparkling waves in glee. सेटा कौन हब ना B हब okay in such a jocund company. कंपनी माने ता सहित कहार मैच नाही गे कंपनी नी होउची तो नी संगे तो किछि मैचिंग नाही तो सेटा हिजबो कोन ना सी ओके आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट तो थॉट और ब्रॉट सेम अछि तो कोन हो ना डी ओके तापर लिखा हिची फॉर ऑफ व्हेन ऑन माय काउच आई लाई तापर देखो थर्ड लाइन रे हमरा अछि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई तो कौन अच्छी सेम अच्छी दीटा तो तार कौन हबा ना ए हबा ओके इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड which is the bliss of solitude सेटा कौन हबा ना ए बी तापर कौन हबा and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils तो से जगह रे कौन हबा ना सी rhyming scheme में बुझी परला the rhyme scheme of the first two stanzas are the same A B C. Rhyme scheme of the third stanza is A B A C D and fourth stanza is same as the first and the second one A B C. Okay এটা হলো rhyme scheme rhyming scheme পরে কোন দিয়েছি how many times is the word dance repeated in this poem in which line does it show the happiness and liveliness of the flower sorry children মানে এই কোশ্চেন পছরা আইছে কি আমার ডান্স ওয়ার্ডটা এই মানে স্ট্যান্জা রে পোয়েম রে কত থর ইউজ হইছে ওকে the word dance has been repeated 4 times in the poem it has been used once in each stanza in the line 12 it shows the happiness and liveliness of the flower okay then we'll move to the 16th question 16th question रे कोन देइची in which line does it create a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves and our daffodils and the waves ra जो harmonious relationship भितरे बिसरे कोटी describe कराइछि को lines रे as in line 13 and 14 the word dance created a sense of harmonious relationship between the daffodils and the waves line 13 रे कोन दिया आइछि ना हमरो harmonious behavior दिया line 13 रे कोन दिया ना harmonious behavior 13 रे कोन लिखा the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee and poet could not but be gay in such a jocund company okay बुझि परला then we'll move to the 17th question 17th question रे कोन देइछि ना in which line does this harmonious relationship include the poet himself माने ए को माने लाइन रे ए हार्मोनियस रिलेशनशिप ता पोएट को भी इंक्लूड करिछि in the line 17 the poet got included in the harmonious relationship of the waves and daffodils when he felt cheerful in their company माने एट जो लिखा है in such a jocund company a poet could not but be gay in such a jocund company तो सही जगह रे हम पोएट भी इन्वॉल्व हेचंती okay then we'll move to the 18th question रे कोन दियाइछि ना what figures of speech do you find in this poem we find figures of speech of similes and metaphors okay simile माने कोन की जानि परबो जो सेंटेंस रे like as okay माने कंपैरिजन जाको जो सेंटेंस रहबे ताको सब सिमिली कुआ जाय आ जोटी हुएनी ताको सब मेटाफर्स कुआ जाय okay तापरे simile is a figure of speech that makes an explicit comparison between two unlike things by using like as etc ହେଲା
माने जो सिमिली है एमती गोटे माने फिगर ऑफ स्पीच ओके जोटा कि यूज हुए दीटा जिनसर कंपैरिजन माने आमर ब्रीज आउ माने आमर कोन कहंदिनी आमर वेव्स आउ डैफोडिल्स रे किछि कंपैरिजन राइट किछि सिमिलरिटी नै बट हेले भी तांको कंपेयर करा जाईछि कोन पे कंपेयर करा सेही प्रकार रे कंपेयर करा जाईछि ओके तो सेत पे से जगहटा बोले सिमिली आई वांडेड लोनली एज अ क्लाउड सेठी एज लिखा आइछि तो एज माने कौन आम पोएट माने निजो को क्लाउड से तो कंपेयर कले तो सही सेंटेंस को कहा जाए सिमिली ओके सही सेंटेंस रे हमरा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज कराई छी सेटा है सिमिली माने as the loneliness of the poet resembles the loneliness of the cloud that is floating high in the sky the figure of speech used is a simile what other examples of the simile do you find in the poem आउ कोटी कोटी माने सेही टाइप रो वर्ड्स यूज कराउची सेटा लिखिबार अछि माने जोटी कि एज लाइक यूज करके कंपेयर कराइछि द अदर एग्जांपल इज ऑफ सिमिली इज फाउंड इन द सेकंड स्टैंजा ऑब्वियसली हमरा माने जो आउ गोटे एग्जांपल जो सिमिली रो एग्जांपल हमरा कोडी अछि ना सेकंड स्टैंजा रो फर्स्ट लाइन रे अछि फर्स्ट लाइन रे कोन लिखा आइछि जोटी कि एज यूज हेछि एज यूज हे कि कोन लिखा आइछि कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन हला सेही जगह रे पोएट हमर डैफोडिल्स को जेतु स्टार से तो कंपेयर करिसेंती तो सेत पय सेडा हला कोन ना सिमिली ओके देन विल मूव टू दिस नेक्स्ट 28th क्वेश्चन रे कोन दिया आइछि metaphor is a figure of speech that makes an implicit comparison between two unlike things in what wealth the show to me had brought the poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene of the flowers as wealth माने मेटाफर का कुआ जाए ना जहार किसी कंपैरिजन ही नहीं से जिनस को जो कंपेयर करा जाए विदाउट यूजिंग लाइक आउ एज तो से जगह रे कौन हुए ना ताको कौन कुआ जाए ना मेटाफर कुआ जाए डज ही यूज मेटाफर हियर Yes, the poet has used metaphor here. In the line, what wealth the show had brought, the poet imagines the happiness brought to him by the beautiful scene of the flower as well. The word don't have any literal meaning here. Okay, माने ए वर्ड रे किछि लिटरल मीनिंग नहीं बट हेले भी पोएट ताकू कंपेयर करिसेंती कंपेयर केमिति करिसेंती ना विदाउट यूजिंग लाइक आउ एज सिपय ए जगहटा हला कोन ना मेटाफर ओके देन विल मूव टू द 21st question कौन दिया 10,000 saw I at a glance is it an exaggeration will you call it a hyperbole अच्छा माने hyperbole टा कौन hyperbole is nothing but is an माने exaggerated statement made for effect माने कौन माने से माने कौन जोड़ा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिसाब रे माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिसाब रे जोड़ा माने डिस्क्राइब करा जाए जोटा कि माने बहुत ही बड़ कि बहुत ही अधिक हिसाब रे माने डिस्क्राइब करा जाए ताकू कुआ जाए माने जोड़ा भी माने ह्यूज नंबर रा जो येटा दिए माने कोन गंती हमरा हमें एमटी भी कहि परिबा कि माने केमती टाइप माने एमे एमती कंसीडर करिवु जेटा जेमती कि सेटा बहुत ही अधिक ओके सेटा को हाइपरबोल कहा जाए तो हाइपरबोल इट कौन जाए हाइपरबोल इज एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट मेड फॉर इफेक्ट हियर द पोएट इज एम्फसाइजिंग ऑन द ह्यूज नंबर ऑफ डैफोडिल्स ओके माने सबुठु माने अधिक माने बहुत अधिक जदी गोटे जिंस को माने हमें प्रेजेंट करू ओके माने मोर देन नॉर्मल जते हमें प्रेजेंट करते तो हाइपरबोल कहा जाए ओके so it is considered it daffodils को 10,000 and more जेमती कुआ जाए तो सेत में ताको हाइपरबोल कुआ जाए last but not the least हमरा माने figure of speech तो देइची what figure of speech does the poet use in they stressed in never ending line this माने द हमको पचराई जेडी हम पोएट माने को टाइप रो फिगर ऑफ स्पीच यूज कर फर्स्ट हमें फिगर ऑफ स्पीच गोटे देखले सिमिली जोथरे कि लाइक आउ एज मिसी की कंपैरिजन हुए देन विल हमें देखिले मेटाफर रे भी सही सेम कंपैरिजन ही हुए बट हमर लाइक एज ए सब जिंस लागे नहीं ओके सेटा हे गला गोटे
आउ आमर एबे देइची जेहेतु आमर आउ गोटे दिया है कौन ना फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड माने आमर एई जो आमे प्रीवियसली एबे डिस्कस कले हाइपरबोल गोटे एमती फिगर ऑफ स्पीच जोटा कि माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज नंबर ह्यूज अमाउंट ए जिंस को डिस्क्राइब करे ओके तो दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन माने कौन ता मानेटा कौन कि से एते अमाउंट रे थिले कि माने आम आखि भी सेते दूर पाइबनी कि आमे ताकू काउंट करिकी आमे कहि परिबु कि सेटा पर्टिकुलरली एतिकीटा ही फ्लावर्स अच्छी कि आठू अधिक अच्छी से से कहै दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन ओके तो एटी फिगर ऑफ स्पीच टा कौन ना हाइपरबोल ओके द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज हाइपरबोल प्लीज पिला माने आई गेस तुम मैंने सब स्क्रीनशॉट नहीं जाइछ जदि भी नहीं ना आई थिंक माने तुम मैंने आंसर्स गुड़ा मार्क भी कर देइथबो बुक्स रे निज निज बुक्स मनगरे सो माने आई थिंक माने ए क्लास तुम मानको बहुत ही हेल्पफुल हेइथबो कारण मु तुम मानको तो सब जिंस एक्सप्लेन करी देली आउ माने मु तो मते तो जा लागुथबो तमे ए एक्सप्लेनेशन सुनला परे आई डोंट थिंक यू विल एवर माने तमे ए चैप्टर टाको केबे भूली भी पारिबो निज माइंड रो केबे काढी भी पारिबो ए चैप्टर को बट स्टिल देन तम माने प्रैक्टिस कर ए सब जिंस को कारण विदाउट प्रैक्टिस किछ भी माने पॉसिबल हबनी बहुत सारा प्रैक्टिस दरकार हमको ए चैप्टर्स को कंप्लीट करिया को हेले सो कीप प्रैक्टिसिंग आउ माने पोएम्स टा आई थिंक 2 to 3 टाइम्स जदि तुम पोएम टा को रीड भी कर देला ताले पोएम टा भी पूरा मने रहि जिबा जदि किछ भी क्वेश्चंस माने से जदि हमको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो क्वेश्चन गोटे देइतला मझरे सेमते टाइप रे आउरी भी क्वेश्चंस आसीबो ताले तुम इजीली से क्वेश्चंस को आंसर करि परिबो किछि भी डिफिकल्टी फेस करिया को पड़िबोनी सो नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे हम जेतु कहतली कि आमे जो नुआ आउ गोटे पोएट्री करिबा okay I'll tell you one thing some students are demanding me to start the chapters माने को chapters कहले जो non detailed study रो chapter गुडा को start करबा को कहउछंती पिला माने don't worry children मु बहुत जल्दी तार भी स्टार्ट कर देबे मु जेतु कहितली तम मन को मु कहिछि माने मिड सुधा मु तमरो पूरा सिलेबस को कवर करि देबी तो हैव फेथ मु माने मिड सुधा तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट करे देबी तार सब क्वेश्चन आंसर्स प्लस तार माने हमर जो राइटिंग पार्ट गुडा जो हमर आई थिंक हमर राइटिंग पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होबा पर मु बहुत जल्दी तुम मन को माने तम क्वेश्चंस ऊपर जेमति थिला रिपोर्टिंग इवेंट्स आउ बिजनेस मैटर्स नोट मेकिंग माने क्वेश्चन को जति कि मु मार्क करछि रिपोर्टिंग इवेंट्स तमर अछि नोट मेकिंग एंड समराइजिंग टा आसुची तमर एग्जाम्स रे रिपोर्ट राइटिंग टा आसुची देन एसे आसुची आ पैराग्राफ राइटिंग आसुची तो मु एई पोर्शंस गुडा को बहुत जल्दी कवर कर देबी आ हां जेतु पिला माने रिक्वेस्ट करी चंदी मु आउ गोटे पोएट्री द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन टा को कंप्लीट कर साला परे मु स्टार्ट कर देबी द डॉक्टर्स वर्ड ओके जस्ट तुम मैंने वेट करू था आ चैनल को सब्सक्राइब करके ता साइड जो बेल आइकन अच्छी ताको क्लिक कर सो दैट जहाँ भी नुआ वीडियोस अपलोड हम सबू वीडियोस रा अपडेट्स तुम मैंने इजीली पाई जीवो टिल देन टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू